introduce yourself to the board? Yes, ma'am. No, good evening, ma'am. My name is H. Swadhin. I belongs to Devpur, Raigada. I have completed my graduation in English Literature from BJP Autonomous College, Bhubaneswar. My hobby is running and my interest in playing outdoor sports. So you are interested in playing cricket. Yes, ma'am. So tell me about one cricketer Yes, जो तुम follow करो. Ma'am, Sachin Tendulkar. He is Sachin. currently retired, but I admire किसी him the most. records तांकर एंती जोटा के बेब सुधा की भांगी ना. Yes, ma'am. He scored 100 centuries in the international level, ma'am, which is unmatched till now. Okay. So your optional is sociology. Yes, ma'am. So मते को कि society रे किछि problems चले चे किछि issues चले चे. Okay, ma'am. तो माने वो जोड़ा कि बहुत एबे न्यूज रे अछि बा तुमको सेटा हॉट करू चे तो सेतिर किछिटा इश्यू कहि परबे. सोशलाइज करेंगे ना मैम. मैम मो डिस्ट्रिक्ट रे ही जहाँ गोटे प्रोब्लेम चलती जोटा कि माने माइनिंग रिलेटेड इशू मैम जेहेतु मु रायगड़ा बिलोंग करे आम डिस्ट्रिक्ट रे बक्साइड अच्छी जोटी की डेवलपमेंट करने को चाहूँगी सरकार किंतु जेहेतु आदिवासी हिल्स सेटा एबे न्यूज एबे जोटा सिजिमाली हिल्स. यस मैम. लोक मैंने सी जो डेवलपमेंट हवा को चाहूँगी जेहेतु से डेवलपमेंट द्वारा सेमानकर बिटामाटी जाऊँगी से डरुंच जे आम माने पितृ पौतृक जमी जोड़ा सेटा माने चली जाऊँ आमको डेवलपमेंट द्वारा आमको किसी बेनिफिट हो न पारे कहीं ग्राम सभा को लेके गोटे से भितर कॉन्फ्लिक्ट अछि कोन सेटा मैम सेटा फेक बेनिफिशियरी को सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर दीछन जे मैम ग्राम सभा एक्सेप्ट कर देला जे आपण माने एई जो 3 किलोमीटर रास्ताटे बना हवार अछि सेटे से रास्ताटे बना हबो कि फेक बेनिफिशियरी मान को सिग्नेचर सपोज कॉन्फ्लिक्ट हला और तुम सेटे एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन से बिल्कुल तुम सेटे कोन स्टेप्स नै थांदो शॉर्ट टर्म रे कोन नै थांदो लॉन्ग टर्म रे कोन मैम शॉर्ट टर्म में तो मु सी एरिया जो माने सरपंच हेले कि ताको गाँव जो इन्फ्लुएंशियल लोक मैंने अच्छा मु तो सेमानक सहित कथा होती सेमानक मु जो प्रकल्प माने प्रोजेक्ट हेबार अच्छी तार गुरुत्व एवं सेमानक डेवलपमेंट विषय टिके बुझे था सेमानक एटा शॉर्ट टर्म रे मैम आ मु चाहिए जे केमिति यथाशीघ्र से जो माने प्रोटेस्टा होची ताको इज डाउन करबा को आ लॉन्ग टर्म रे मैडम मु ट्राई करबी या जे लोक मानकर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हबो से माने जो जगह जाउची से जगह बदल रे से माने अलगा जगह पाइबे एवं सेमानकु से प्रोजेक्ट हवा द्वारा से प्रोजेक्ट समय रे ही प्रतिटी घर रु गोटे गोटे सदस्य को से प्रोजेक्ट रे किछि गोटे काम देला टाइप रो तुमको लागो जे कि एबळे एग्रीटेशन जो होची नियम के रेटे हेतिला देने बैठी जे तो आमे गवर्नमेंट चाहूची कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आसो लोक मानन को सेटा सपोर्ट मिलेबो इकोनॉमिकली तो एथिरे किंतु ए जो सिचुएशंस क्रिएट होची सेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ड्रीम अछि सेटा को हमपर करिवो कि मैम सिचुएशन तो आगु भी ही आसी आउ जेहेतु लोकंकर निज जगह जाउची ए सिचुएशन आगु को भी हेबार संभावना अछि किंतु मैम जो बॉक्साइड आम ओडिसा रे एबंडेंट अमाउंट रे अछि तार प्रॉपर यूटिलाइजेशन हेले से आम ओडिसा रो विकास रे हेल्प करिवो से तो कौन स्टेप से क्वेश्चन टाइम पचार कि आमे बॉक्साइड और हमर अछि हम पाखरे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लानिंग अछि इन्वेस्टर्स माने भी रेडी अछंती बट एई वाला जो सिचुएशन होची इन्वेस्टर्स माने मे भी रिटर्न करे जे तो गवर्नमेंट कौन स्टेप्स नेबा दरकार कि कौन सेथरे कि को स्टेप्स नबो सो दैट कि ए जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होबनी फॉर द टाइम अच्छा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्कीम मैम फिर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तापरे ए जो ग्राम सभा लोकंकर प्रॉपर एसेंट मैम ए स्टेप्स गुडा नेले होय तो आगु को एंता किसी हे करबा ACRB data on student suicide currently I am unaware about ma'am but student suicide is there ma'am campus रे student suicide rate बढ़ु छै कौन स्टेप्स नहीं होबो अदर प्राइमरी कॉज कोन मैम स्टूडेंट सुसाइड रो प्राइमरी कॉज होछ मैम स्ट्रेस आ एंजाइटी डिप्रेशन एगुडा मैम जेहेतु से माने कोन पे होछ मैम एकेडमिक प्रेशर फिर फैमिली प्रेशर मैम जे भलो स्कोर करिवार छी कोइ की जदी से माने निजो एक्सपेक्टेशन को मीट करि पारनांती से माने चूज करछंती जे सुसाइडल स्टेप जे मु जेहेतु मु घरे कोन मु देखैबी कि मु करते कोन तमे रिड्यूस करियो कोन स्टेप्स नै करियो कोन स्टेप्स मेजर माने एडवाइस करियो कि सजेशन दो एडवाइस दनो सजेशन दो कोन सजेशन दो अवेयरनेस कैंप्स मैम अमंग द
parents and for the students also मैम तापरे rehabilit माने sorry जो recreational activities मैम जेमती पेरेंट्स टीचर कमिटी yes ma'am तापरे student मन को ପାଇଁ भी various माने ए जो जेमती कल्चरल सोसाइटी अच्छी फिर डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गुड़ा अच्छी से गुड़ा कर पार्टिसिपेट करी कि केवल एजुकेशन ही ओडिशा गवर्नमेंट रो किछि इनिशिएटिव को जोटा एजुकेशन को प्रमोट करया पई करा को लेवल ऑल ओडिशा आदर्श विद्यालय मैम जोटा कि ट्राइबल स्टूडेंट मन को इंग्लिश मीडियम रे टीचिंग देवा ପାଇଁ हला मैम तापरे 1 सेकंड मैम हाँ वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स मैम एग्जांपल scholarship currently I am unable to look at सर what is the name? sir Swadhin Swadhin? yes sir Yes, Swadhin. H Swadhin sir H stands for Hikaka हिकाका yes ma'am Okay, so you studied in Rayagada Junior College and the correspondence in second division, that is in plus 2 or what? 10th sir 10th. yes sir Then BGP College 21st you passed first Yes, sir. division. And your hobbies are running, learning tribal language, yes sir playing outdoor sports, cricket and volleyball. yes sir And in NCC Republic Day camp in New Delhi, wow, participated in gender and stage programs during graduation and optional sociology. So, just tell me what is learning tribal language, which tribal language you are learning now? sir I am learning Kui sir it's the tribal language of Kondho tribe But in Rayagada, that is the, what is the tribal language of Rayagada district? yes sir that's the Kondho tribe sir the Kui and Soras yes sir But Kui tribes are they are residing in Kondhaman, not in Rayagada. in Rayagada also sir Rayagada. the majority of the Kondho tribe resides in Rayagada sir it's nearly 40% of the 40% of people of Rayagada are tribal Kondho sir Okay, tell me what are the developments of Rayagada district and the problems of the Rayagada district? sir first I will tell the problems then the developments sir the problems mains includes sir the connectivity issue low literacy ratio very little health issues also there sir and agriculture also sir it's one season agriculture happens in Rayagada district sir Okay. and the developments are so far sir there are various companies are working in the districts like IMFA a little branch of Vedanta and different companies which provide employment sir and Utkul alumni is also Utkal there. alumni also there sir yes sir JK Paper Mill. yes sir JK Paper IMFA Oh. yes sir Okay. And then a big major change took place in Rayagada. sir A big big major connectivity developed in Rayagada. What is that? yes sir one is Thiruvali airport sir it is proposed Uh-huh. to build a airport in Thiruvali Uh-huh. and sir recently the one of the biggest stations of India has inaugurated in Rayagada railway station There, that division. Yes, Rayagada sir. division declared Yes, sir. recently. yes sir yes And you are saying the poor connectivity. sir a good now point. it's developed It's a junction area. Rayagada is developing. yes sir Okay. Anyway, so you have taken optional as sociology. sociology yes sir You tell me what is AGIL theory? AGIL. AGI sir Yes. sir agile theory stands for sir A for adaptation G for goal orientation I for integration and L for latency sir currently I am unable to recall the name of the thinker sir who gave this agile But what is the implications of the AGIL theory in society? sir it's basically the theory stands for sir adaptation means the adapting social sorry sir I am unable to What is anomie? sir anomie means anomie a state of normlessness sir yes sir An example? example sir anomie sir 1 second sir anomie sir when the French Revolution happened there no law and order was there so people felt anomie sir a sense of normlessness Acha. These days, government is saying that the government of India is proclaiming since last 2-3 years that yes, sir. the government structure, the employees, everybody, minimum government, maximum governance. Yes sir What is the view on that?
So it's the view of minimum government, maximum governance. It's basically a trait of good governance, sir, where the people has to get the maximum services that are designed by the government at the various levels. Any examples? Sir, the CPGRMS, sir, for grievance redressal mechanism. Right. Sir, e-governance, sir, where the paperwork is less and the digitalization was introduced, sir. Then very important step, all states are following, that is, and government bodies also big example. What is that? Sir, DBT. yes, sir, direct benefit transfer. Yes, sir. Sir. Can you explain the social or demographic conditions in Manipur for which riots are going on? Sorry, sir. Manipur, social Yes, condition in Manipur. Yes, sir. Basically, from last 2-3 years, sir, there is a major conflict between two tribes, sir. It's Kuki and Meiti. The intertribal conflict creates a destruction situation there, sir. In that situation, which community is more powerful? Sir, currently I am not unable. Okay. What is census? Sir, census basically program of government for registration of peoples of India, sir, to get the numbers about the population. What are various informations they are collecting under this program? In census, sir, they are taking the number of people residing in a house, the property they own, the size of their land, and their house, sir, as per my knowledge. Number of persons, their education level. Yes, sir. Then, for example, this data will be collected. Yes, sir. Then another organization is there also. That organization process the data. Yes, sir. Statistical organization. What is the name of that organization? Sorry, sir. Actually, we don't use the census data 100%. Okay. Yes. We use the filter data only. Okay. Yes, sir. Okay. That census data is again analyzed by another organization, NSSO. Yes, sir. What is that? National may I guess, sir? Yes. National Sample Survey, NSS organization, sir. Okay, we actually use those data. We cannot use 100% of census data. Yes, sir. Okay. Again, that data will be processed. Yes, sir. Okay. What is the use of the data? Sir, basically, after collecting the data, the state has clarity that the people's various aspects are like socio-economic conditions, where the people needs more developmental programs, and Okay, it's required for various welfare schemes. Yes. Also social schemes. Yes, sir. Okay. Previously, normal census ଆମର 10 ବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ. Yes, sir. Last time କେବେ ହେଇଥିଲା? Sir, 2011 sir. 2011 ତାପରେ କେବେ 2021 ରେ ହବା କଥା ହେଇପାରିଲା କାହିଁକି? सर जेहेतु कोरोना पेंडेमिक टा चलथिला सर सेति पय हे पार नथला डिले हेतला वर्तमान सेंसस रो एगुडा चलचे सर माने सेंसस पय बहुत गुडे माने करंटली सेंसस चल पेंडेमिक टा बेसी एक्सटेंसिव कि एपिडेमिक टा एक्सटेंसिव? कोरोना पेंडेमिक कहला ना? यस सर, आगे सर. पेंडेमिक टा बेसी एक्सटेंसिव आगे सर. एरिया वाइज और एपिडेमिक सर एक्सटेंसिव सर माने एथर जोडा ମାନେ ବେଶୀ ଏରିଆ କଭରେଜ କାର ମାନେ पेंडेमिक रो सर. पेंडेमिक सियोर तो सॉरी सर. अरे ठीक कहଛ सीधा कॉन्फिडेंट को रिपीट करते को भाव जब आगे सर. सेटा नल मन रखियो एपिडेमिक तापरे कोन पूरा ऊपर पेंडेमिक Yes, ता sir. ऊपर कोन सर से पेंडेमिक ता अपने लोअर रे अछि हां सेटा Yes. मन एपिडेमिक वाट ता कहछ पुनी जेटा क्वेश्चन टाणी हिच ऑटोमेटिक यस सर. ठीक है आंसर ता ठीक अछि सेटा हम डेरिया ठीक है तुम कॉन्फिडेंट इटा अछि ठीक आउची क्वेश्चन तो सीधा हो स्ट्रेट क्वेश्चन हां ठीक आउची वन सीधा अच्छा, आगे. सीधा हो यस सर. यस जे आंसर करियो किछ असुविधा नहीं और चेन टा कोन देखा जिवो ना टाइप इन देबी सर. हां टाई और ब्लेजर पिन देबी आगे सर. कंफर्टेबल जति पिंदो यस सर. ना यस सर. सेठी हमने ना कंफर्टेबल थियो सर. हां कंफर्टेबल पिंदो यस सर. ठीक है ओके તમે રાયગડા રહો છો કે यस सर. કો છે राइडर नो मो घर थेरुवली सर. તેરવલી गाँव रे रुए सर मो. તેરવલી ગાଁରେ यस सर. તમે તેલુગુ ना मो एक्चुअली आदिवासी सर.
पर आसे मत तेलुगु लैंग्वेज आसे ଆସେଣ୍ଟଟା ସେ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ତ अच्छा अच्छा सर जेतु कनेक्टिविटी अछि आंध्र प्रदेश सहित सर ହଁ ହଁ हां हां ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହାଇ ପିଚ୍ରେ ଏବେ ଟିକେ ରିଲିଜ୍ କର यस सर ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା, ପରଫେକ୍ଟ ଟା- ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି Yes, sir. ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ यस सर ଆଉ ଗେସ୍ ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗେସ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ସେମିତି ହବନି ଯାହା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଆସୁନି 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 ହେଲା ଆଉ ତମକୁ ଗେସ୍ ମାରିବନି यस ଗେସ୍ ମାରିଲେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ ଯଦି यस सर ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ हाँ सर आगु सीडीएस इंटरव्यूज दी सर डिफेन्स एसएसबी जोड़ा कहते